Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah, increase us in knowledge. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be enjoying good health. Okay, grade 2. In your previous lecture, you learned about common and proper noun. Okay. In the following lecture, we will learn about countable and uncountable nouns. Fine. Let's see what are countable and uncountable nouns. Okay, the things we can count are called countable nouns. For example, when you see the countable nouns, first of all, we see that we can put a number before them. For example, 1 mango, 2 mangoes, 3 chairs. Okay, जितने भी आपके countable noun हैं, उनसे पहले हम नंबर लगा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और as many they are. ठीक है. The second thing is this, when we can make their plural by adding s or es. For example, अगर आपके पास एक book है, तो you will write book, and if it is more than one, तो you will write books. Okay, you are going to add s. या box में boxes es आपने add कर दिया, ठीक है. So अब काउंटेबल नाउन्स में हमें दो चीजें अभी तक पता चली. पहली क्या कि आप इनसे पहले नंबर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5. और इसके अलावा जब आप इनके प्लूरल बनाते हैं तो आप उसमें एस और es ऐड करते हैं. अच्छा जी, वन मोर थिंग, इन सिंगुलर फॉर्म दे टेक आर्टिकल्स. फॉर एग्जांपल अ बुक, एन एप्पल. जब ये सिंगुलर होते हैं यानी एक होते हैं, तो हम उससे पहले आर्टिकल आ या एन यूज कर सकते हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन में हम नहीं कर सकते. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स. Things or objects that cannot be separated or counted individually are called uncountable noun. वो सारी चीजें जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलहदा से काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे वाटर. वाटर को हम सेपरेट तो नहीं कर सकते उसके मॉलिक्यूल्स को, और उसको ना ही अलहदा से काउंट कर सकते हैं, ना हम उसको वाटर्स कह सकते हैं. सो इट इज एन अनकाउंटेबल सॉरी इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन. ओके. Okay, uncountable nouns में we do not use a और n before them. ठीक है, हम इससे पहले a और n नहीं यूज कर सकते. जैसे आप a water, n water नहीं यूज कर सकते. We cannot put a number before them. 1 water, 2 water या 1 rice, 2 rice आप नहीं कह सकते. They have no plurals. We do not add s or es to them. ठीक है. Uncountable noun के plurals भी नहीं होते, जैसे waters नहीं हो सकता, rices नहीं हो सकते. ठीक है ना. तो हम इसके आगे s या es भी नहीं ऐड करते. Is this clear? यानी अब देखें कि अनकाउंटेबल जो नाउन है वो इंडिविजुअली हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते. हम उससे पहले आ और एन यूज नहीं करते. हम उससे पहले नंबर्स 1, 2, 3 नहीं यूज करते. और इसके अलावा हम उसके प्लूरल्स नहीं बनाते, एस और एस ऐड करते. ठीक है. अच्छा जी. We use words like some, little or much to show their quantity. ठीक है. हम इनकी क्वांटिटी को, मिकदार को शो करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? Some, little या much. For example, some water in the jar, या little water in the glass, या much water in the pond. Okay. यहाँ पे हम ये सारे वर्ड्स उनसे हैं, some, little and much. ये हमें क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितनी है, ये कम है या ज्यादा है. ओके. Fine. You have to remember one thing. Many and much are the words used to quantify nouns. Okay? Many और much वो words हैं जो किसी भी noun की quantity बताने के लिए use होते हैं. लेकिन जो चीज आपने याद रखनी है वो क्या है कि many is used for the countable nouns, whereas much is used for uncountable nouns. जैसे मिसाल के तौर पे अगर बहुत सारे बॉयज हैं तो यू कैन से मैनी बॉयज, आप काउंट कर सकते हैं ना उन्हें. आप मच बॉयज कभी भी नहीं करेंगे. ठीक है. सो फॉर काउंटेबल नाउन वी यूज वर्ड मैनी. इसी तरह वर्ड जो मच है, जैसे अगर आपके पास बहुत सारी मनी है तो हम कहेंगे वी हैव मच मनी, लेकिन हम कभी भी नहीं कहेंगे वी हैव मैनी मनी. सो मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके. यस. So here you can see the example. There are many boys and I have much money. Is this clear? Okay.
Here comes the activities. Okay, now this is your question number 1. Tell whether the underlined word is countable or uncountable noun. ठीक है, ये फर्स्ट टू आपके लिए मैंने किया हुआ है. Would you like some milk? अब मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं. Of course ना, हम मिल्क को सेपरेट कर सकते हैं, ना काउंट कर सकते हैं. So this is uncountable noun. ठीक है, अब अनकाउंटेबल के लिए इसके ऊपर मैंने यू लिखा है. ठीक है, आपने भी इस तरह इसके ऊपर यू लिख देना है. You need eggs for this recipe. So eggs आप count कर सकते हो, 1 egg, 2 eggs. ठीक है, so you are going to write C on it. ठीक है, आपने uncountable के लिए U और countable nouns के लिए C लिखना है. अच्छा जी, फर्स्ट टू आई हैव डन फॉर यू. बाकी के सारे आपने खुद से पढ़ने हैं और खुद से करने हैं. Our living room has so much furniture. अब जरा ये बात आपने सोचनी है कि फर्नीचर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है. क्या आपने कभी वर्ड फर्नीचर्स या वन फर्नीचर, टू फर्नीचर सुना है? आई थिंक इट इज अनकाउंटेबल. ठीक है, देयर आर a lot of flowers in the garden. ठीक है, दिस इज अ काउंटेबल नाउन. ओके, Nina should listen to her teacher's advice. So teacher can be counted. Okay, I have some chocolates. You can count the chocolates, or you cannot count the chocolates. Yes, you can count them. My brother bought a pen. It is countable. There are black clouds on the sky. Okay. So, question number 2. Go to your kitchen, find and write 5 countable nouns and 5 uncountable nouns. Okay. The first one I have done. You can count the word oven, but you cannot count the word sugar. Okay? तो आपने अपने किचन में से फाइंड आउट करना है कि कितने अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और कितने काउंटेबल नाउन्स हैं, और उसको इस लिस्ट में ऐड करना. ठीक है जी. क्लास 2. Here is the story time. The story is about a greedy dog. Fine. So what happened? That once upon a time, there was a dog. He was very hungry. He got a piece of meat. He reached at a stream. He saw his reflection in the water. He thought another dog with a piece of meat. He wanted to get it. He opened his mouth. He lost his own piece of meat. So the moral is greed is curse. What happened? कि उसने सोचा कि एक और डॉग भी है जिसके पास एक और पीस ऑफ मीट है. वो लेने के लिए उसने जब मुंह खोला तो he lost his own. So greed is curse. लालच बुरी बला है. You have to write this story on your grammar book. और आपने इससे पीछे वाला टॉपिक भी जो सा है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन वाला भी सारा अपनी ग्रामर बुक पे करना है. उसकी एक्टिविटीज करनी है और अपनी ग्रामर कॉपीज जो सी हैं वो 15 अगस्त सैटरडे तक स्कूल में सबमिट करवानी है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज.